मॉर्निंग 6 क्लास। बेटा हमने अलजेब्रा का टॉपिक शुरू किया था। आपको फर्स्ट डीजी में मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा करवाया है। आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में और इंट्रोडक्शन अलजेब्रिक इक्वेशन के बारे में रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या क्या है आपके इसमें? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देखिए। Sam, Stella, and Tony have each bought cakes from a cake shop. Sam bought 2 more cakes than Stella did. Tony bought 4 fewer cakes than Stella did. We don't know how many cakes Stella has bought. Let's assume the number to be x. Sam has 2 more cakes than Stella has. So we'll add 2 to the number of cakes that Stella has, which is represented by x. Therefore, we can say that the number of cakes Sam has is the sum of x and 2. Now, Tony has 4 fewer cakes than Stella has. So, we subtract 4 from the number of cakes Stella has, which is represented by x. Therefore, the number of cakes that Tony has is the difference between x and 4. Observe that in these 2 examples we have a variable, a mathematical operation, and a constant. These combine to make up an algebraic expression. In general terms, algebraic expressions contain variables, mathematical operators, and constants. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखिए x + 2 और x - 4, ये प्लस का है आपका, वो माइनस का। We do not know the exact number of cakes that Stella, Sam, or Tony bought, because the value of the variable x is not known. Since x has no fixed value, it could be any number, such as 5, or 6, or 16, or even 100. Therefore, we cannot evaluate the expressions here. A variable does not have a fixed value. It can assume any numerical value. Hence, expressions that contain variables with no given value cannot be evaluated. Only if x has a definite or finite value will we be able to evaluate the expression. In the cakes example, let's say x has a particular value 12. In that case, we can substitute the value of x in the expressions. So, the number of cakes Sam has will be the sum of 12 and 2, which is 14. The number of cakes Tony has will be 4 less than 12, which is 8. Look at this expression. How is it formed? The variable c is added to 8. 8 + c = क्या बन गया? c is added to 8, c को 8 में ऐड किया गया। ओके स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन का मतलब यही है। Here, 17 is subtracted from the variable x. 17 is This subtracted. algebraic expression is Minus formed by किया गया। multiplying 9 and s. In this algebraic expression, y is divided by 4. Next, let's form algebraic expressions based on the information given. We'll begin by forming an algebraic expression for 2 added to y. The expression would be y plus 2. इन्होंने बोला 2 is added to y, तो 2 को y में ऐड किया गया, तो क्या बन गया? y + 2। ओके स्टूडेंट्स, अगर माइनस होता तो y - 2, मल्टीप्लाई होता तो 2y, और डिवाइडेड होता तो y / 2। Now, let's form an expression for d subtracted from 11. This is represented as 11 minus d. The product of -5 and x is -5x. बिल्कुल t ठीक है। divided by 20 is represented as t over 20. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि माइनस क्या है, प्लस क्या है, मल्टीप्लाई क्या है और डिवाइड क्या है। अब इस एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे हम। कहते हैं ऑन ईच कार्ड देयर इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्लिक ईच कार्ड टू डिस्क्राइब हाउ टू एक्सप्रेशन इज फॉर्म। -tc, तो इसको क्या किया गया? मल्टीप्लाई।
माइनस टी इज मल्टीप्लाइड बाय सी, बिल्कुल ठीक बोला ना मैंने। तो माइनस का 10 इज मल्टीप्लाइड बाय सी, तो माइनस 10c बन गया इसका। तो नेक्स्ट कार्ड को देखें, 5a माइनस 9, तो 5a में से क्या सब्ट्रैक्ट किया गया है, -9। तो इसकी एक्टिविटी देखते हैं हम। फर्स्ट 5 इज मल्टीप्लाइड बाय a, पहले 5 को इन्होंने a से मल्टीप्लाइड किया तो a है, 5a आ गया। देन 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, तो फिर हमने 5a में से क्या सब्ट्रैक्ट किया है, 9। थर्ड है कार्ड आपका 7 बाय y, तो y 7 को सब्ट्रैक्ट किया गया y से, तो 7 इज डिवाइडेड बाय y, 7 को डिवाइड किया गया है y से। नेक्स्ट कार्ड इज 4 + 5x, 4 को ऐड किया गया 5x में, लेकिन 5 को किससे मल्टीप्लाई किया गया, x से। 4 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड x, क्योंकि प्रोडक्ट का मीनिंग भी क्या होता है, मल्टीप्लाई। सब बच्चे एक बार ध्यान से देखिए करेंगे इसे, सब बच्चे ध्यान से देखिए, एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगी। मैंने फिर एक्स्ट्रा बना लिया कल के लिए, तो चक्कर 2 चल रहे होते थे। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे एक बार इसे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कार्ड में देखा है -10c को क्या किया है, -10 इज मल्टीप्लाइड बाय c। 5a - 9 में क्या है, फर्स्ट 5 इज मल्टीप्लाइड बाय a एंड देन 9 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। 7 इज डिवाइडेड बाय y और लास्ट है आपका 4 इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड x। ओके स्टूडेंट, अब है एक्टिविटी 2 आपकी। इसमें भी यही है, क्लिक ईच कार्ड टू फॉर्म एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, के लिए हर कार्ड को हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट। 3 इज मल्टीप्लाइड बाय a, तो 3 को मल्टीप्लाई करना है a से, तो 3a एंड देन 2 इज सब्ट्रैक्टेड, तो -2, 3a - 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, 2 इज सब्ट्रैक्टेड, हाँ 3a - 2, बिल्कुल ठीक है जी आपका आंसर। सब बच्चे ध्यान से देखें, इन्होंने जो क्वेश्चन इन्होंने बोला है, हमने अगर उसके अकॉर्डिंग काम किया है तो आपका आंसर ठीक आएगा। इन्होंने फर्स्ट बोला है 3 इज मल्टीप्लाइड बाय a, 3 को a से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3a, फिर देन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में से 2 माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3a - 2। नेक्स्ट कार्ड है आपका, देखिए थोड़ा सा थिंक करना है, सोचना है। z इज डिवाइडेड बाय 3, z को डिवाइड करना है 3 से, तो z/3 एंड देन 6 इज एडेड टू द रिजल्ट +6। z/3 हमने डिवाइड कर दिया, इसमें रिजल्ट में क्या प्लस करना है 6। सब बच्चों को क्लियर हो रहा है ये। थर्ड कार्ड इज x इज मल्टीप्लाइड बाय 4, x को 4 से मल्टीप्लाई करना है, x इज मल्टीप्लाइड बाय 4, तो क्या आ गया, x इज मल्टीप्लाइड बाय 4, 4x एंड देन द प्रोडक्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, इस प्रोडक्ट को 7 में से माइनस करो, तो 7 - 4x, 7 - 4x। देखें आपका आंसर, बिल्कुल ठीक है जी। सब बच्चों को क्लियर हो रहा है। तो हमने इन कार्ड्स को पहले रिवाइज करना है, तब आप उसके आंसर्स दे सकते हैं। 14 इज डिवाइडेड बाय b, तो 14 को डिवाइड करना है b से, तो b/14 एंड देन 9 इज एडेड टू द रिजल्ट +9, तो b/14 + 9। सेकेंड कार्ड की तरह है आपका थोड़ा सा ये।
14 by b, 14 is divided by b, 14 डिवाइड करना है b से, उसमें प्लस करना है 9. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट. तो इस प्रकार आपने क्वेश्चंस इक्वेशंस को समझ कर करना है, जो कि आपके चैप्टर्स में भी We can use algebraic expressions for real life situations. Let's look at a few such situations. The cost of the bigger bottle of juice is 11 rupees more than that of the smaller bottle. What is the cost of the bigger bottle? The cost of the bigger bottle of juice is rupees 11 more than the smaller bottle. What is the cost of the bigger juice bottle? तो देखिए इसका क्या आंसर निकलेगा. Let the cost of the smaller bottle of juice be x. Therefore, the cost of the bigger bottle of juice will be x plus 11. Let's continue. Rack A holds 18 fewer garments than rack B. How many garments are there on rack A? Rack A has 18 clothes. Rack A में 18 clothes हैं, less than rack B. Rack B से इसमें 18 clothes कम है, तो क्या बनेगा इसका आंसर? Let the number of garments on rack B be x. Therefore, the number of garments on rack A is x minus 18. Let's continue. The age of Anita's grandfather is 4 times Anita's age. What is her grandfather's age? 4 times है, तो अगर इसकी एज हम अनीता की x मानेंगे तो कितना आ जाएगा 4x. Let Anita's age be x. Her grandfather's age will be 4x. ओके स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है आपको? तो जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग करवाया था, चैप्टर में भी आपको यही चीज़ें समझाई थी, तो आपको डीजी में भी यही चीज़ें करने को मिल रही हैं. तो इससे आपको क्लैरिटी आती है. द एज ऑफ अनीताज ग्रैंडफादर इज 4 टाइम्स मतलब 4 गुना ज़्यादा. तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. इन्होंने बोला एज ऑफ अनीता, तो पहले हमने अनीता की एज मानी x, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना आ गया 4x. लेट्स कंटिन्यू. The marbles in this jar need to be equally divided between Sam and Sella. How many marbles will each of them get? The marbles in the jar need to be equally divided between Sam and Sella. जो इसके अंदर marbles है, कंचे हैं, उनको equally divide करना है. तो how many marbles will each of them get? तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा. Let the total number of marbles in the jar be x. Since the total number of marbles has to be divided equally between 2 persons, the algebraic expression is x divided by 2. Okay students, तो इन्होंने बोला था कि marbles in this jar क्या दिया है, x माना है इसे, और पर्सन कितने हैं 2, क्योंकि सैम और सेला कितने पर्सन हैं 2, तो इसको 2 से क्या कर दिया, डिवाइड. The length of this rectangle is 6 centimeters less than 2 times its breadth. What is the length of the rectangle if the breadth is b centimeters? तो देखिए इन्होंने क्या कहा है, द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, तो है लेस देन 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ. 2 टाइम्स ब्रेथ करेंगे तो पहले 2 भी आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे हम. The breadth is b centimeters. Therefore, the length is 2b minus 6 centimeters. Okay, students, clear है आपको? The speed of the red bus is 3 kilometers per hour, more than half of the speed of the yellow bus. If the speed of the yellow bus is s kilometers per hour, what is the speed of the red bus? Okay, students, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर. The speed of the yellow bus is s kilometers per hour. So, the speed of the red bus is s over 2 plus 3. क्वेश्चन था द स्पीड ऑफ द रेड बस इज 3 किलोमीटर पर आवर मोर देन मतलब ज़्यादा चलती है 1/2 ऑफ द स्पीड ऑफ द येलो बस की अपेक्षा. इफ द स्पीड ऑफ द येलो बस इज s किलोमीटर दी थी, तो s/2 plus 3. दिस इज आवर आंसर. Container A holds x liters of milk. Container B holds 3x liters of milk. What does this mean in ordinary language? कहते हैं x लीटर ऑफ मिल्क है कंटेनर A में, B में हमारा 3x है, तो व्हाट डज दिस मीन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज?
It means that container B holds 3 times the quantity of milk that container A does. Container B has 3 times the milk of container A does. Okay, students? Sam is R years old. Tony is R plus 8 years old. How would you convert this statement into ordinary language? तो इस स्टेटमेंट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? 11.4 से एक्सरसाइज से रिलेटेड This means that Tony is 8 years older than Sam. Next question is, The cost of the pizza is P rupees. The cost of the sandwich is P minus 50 rupees. How would you convert this statement into ordinary language? कहते द कॉस्ट ऑफ द पिज़्ज़ा इज रुपीज़ पी. इसको पिज़्ज़ा की जो कॉस्ट है उसको पी माना है. द कॉस्ट ऑफ द सैंडविच इज पी माइनस 50. इसमें से माइनस 50 की है. हाउ वुड यू चेंज दिस स्टेटमेंट टू ऑर्डिनरी लैंग्वेज? देखिए ये 11.4 एक्सरसाइज से रिलेटेड है आपका. This means that the sandwich costs 50 rupees less than the pizza does. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? Hit all the pins by choosing the ball with the correct option. What is the algebraic expression for 9 subtracted from 3 times? तो 3 टाइम x है आपका, 3x हो गया. सब्ट्रैक्ट करना है फॉर 9. 3x माइनस 9. देखिए इसका आंसर. आपको क्लियर हो गया? आपका आंसर ठीक था. सेकेंड क्वेश्चन है, सैम बॉट सम पेन. सैम ने कुछ पेन खरीदे. हिज फादर गेव हिम 2 मोर पेन्स. और उसके फादर ने उसको 2 पेन और ज़्यादा दे दिए. हाउ मेनी पेन डज वी हैव नाउ? तो ज़्यादा दे दिए तो 2p आएगा आपका आंसर. ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक है आपका आंसर. मैंने दिया आपको. ओके स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक है हमारा ये आंसर. तो थर्ड क्वेश्चन इज, अब है आपका अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में. अब है आपका अलजेब्रिक इक्वेशंस के बारे में. देखिए बेटा, Sailor has collected some seashells. This basket contains 8 brown seashells and some white seashells. As the number of white seashells is unknown, let's denote it by the variable x. So, the total number of shells in Sailor's basket is 8 plus x. This is an algebraic expression where 8 is a constant and x is a variable. Remember, a variable can take any value. But if we know that there is a total of 15 shells in the basket, we can equate the expression to the number. So, 8 plus x is equal to 15. Now, will the variable x be able to take any value? कहते हैं will the variable x to be able to take any value. 8 plus x is equal to 15. तो अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे? जो इक्वल का साइन है 15 का, 15 में से माइनस, क्योंकि इधर साइन हमारा प्लस 8 का है, तो 15 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू 7. तो आप ये स्टेटमेंट देख सकते हैं. ये भी आपकी एक्सरसाइज 11 से रिलेटेड है. No. By equating the total with 15, we have put a condition to it. This mathematical statement is called an equation. An equation will have two sides, the left-hand side or LHS
and right-hand side, or RHS, which are equal. Take a look at this mathematical statement. Is this also an equation? Is this an equation? क्या एक equation है? Yes, the LHS is equal to the RHS. So this statement is also an equation. Now look at these two equations. How do they differ from each other? एक दूसरे से कैसे भिन्न है, क्योंकि इसमें 8 प्लस एक्स था इज इक्वल टू 15 था, इसमें 13 प्लस 7 इज इक्वल टू 20 है. 13 और 7 क्या हो गया? 20 इज इक्वल टू 20. ओके स्टूडेंट्स. The first equation contains a variable, while the second does not. An equation which consists of numbers only is called an arithmetic equation. An equation which includes at least one variable is called an algebraic equation. Here are a few examples of arithmetic and algebraic equations. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर इक्वेशन से रिलेटेड. आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है और अपना वर्क कंप्लीट करना है. ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे.